classification versus tabulation. Quite often, classification and tabulation are understood as devices for presenting and summarizing the data. But technically, the two concepts are entirely different. What is the difference between classification and tabulation? Classification precedes tabulation. कह रहे पहले डेटा क्लासिफाई होगा, उसके बाद tabulation possible है. तो classification precedes tabulation. Only after classification, statistical data can be tabulated. In classification, data is arranged into different classes according to similarities and dissimilarities, while tabulation is the process of arranging the classified data into rows and columns. What do you mean by tabulation? It is a systematic presentation of numerical data into rows and columns. So presentation follows classification. तो ये कुछ थ्योरी है जो करके ही लिख पाएंगे, जनरल नॉलेज नहीं है. जनरल नॉलेज नहीं है, कर रखी होगी तो आंसर दे पाएंगे, नहीं कर रखी होगी तो नहीं दे पाएंगे. मैं भी डायरेक्टली ना न्यूमेरिकल पोर्शन पे स्किप करके आ सकता हूँ. हाँ, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे उसके बाद, बट ये जो बेसिक थ्योरी है जो इतनी बेसिक भी नहीं है, वो गैप्स रह जाएंगे. सो एक मतलब पर्पस है कि यू शुड रीड ईच एंड एवरी पेज. यू शुड रीड ईच एंड एवरी पेज. You don't have to learn each and everything, but you should at least read. So we don't have the time. I know. And columns with suitable heads and subheads. Classification is a method of statistical analysis, whereas tabulation is a process of presenting the data. In case of classification, data is classified into different groups and subgroups, while in case of tabulation, data is presented in captions and stubs, rows and columns. अभी हम देखेंगे. So classification and tabulation are two different terms. Classification precedes tabulation. What are the different kinds of classification? The data can be classified on the basis of their location, geographical classification, also known as spatial classification, chronological, also known as temporal. ये सब हम ऑलरेडी सुन चुके हैं. क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, कह रहे ये सब हम ऑलरेडी सुन चुके हैं कि काइंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है. पॉइंट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन. तो ये ऐसे आपका पैराग्राफ फॉर्म में पॉइंट वाइज आएगा. ओके, जरूरी नहीं होता कि हर डिफरेंस आप टेबल में बेसिस के साथ दे पाए. कुछ इकोनॉमिक्स में कुछ मेजरली होंगे प्रॉपर बेसिस के साथ, कुछ आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करने पड़ेंगे.